Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 97 for that topic hydrocarbons. Okay, now in the last lecture I have given you introduction of alkenes. Here we have to learn regarding the structure of that ethylene or ethene. तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए that ethylene is formed by or ethylene or ethene I will say is formed by ethylene common name है ethene is ipcine. It is formed by sp2 hybridization. sp2 hybridization of the atomic orbitals of carbon. ये कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर है. अब हमें मालूम होना चाहिए कार्बन हैज गॉट एटॉमिक नंबर 6, तो उसके आउटर शेल में ये 1s2 हो गया, ये तो इनर हो गया. आउटर शेल में हो गया 2s2, देन 2px1 2py1 एंड दैट इज 1s2 2s2 6 इलेक्ट्रॉन कैसे है 2px1 2py1 2pz0. So this is in ground state. In excited state what happens there? One electron from 2s will be promoted into 2pz and then in excited state you will get 1s2. ये तो इनर है, इसकी कुछ जरूरत वैसे नहीं है 1s2 क्योंकि ये रिएक्शन में पार्ट नहीं करेगा. This is 2s1 and then these are 3 orbitals now, each containing one unpaired electron. 2s1 2px1 2py1 2pz1. So there are 4 unpaired electrons of carbon in excited state. ये excited state वाला है, in excited state. ओके, ये ग्राउंड स्टेट यानी जब वो शांत है, किसके साथ नहीं है. जब रिएक्शंस के लिए आ जाते हैं तो कोलिजन से एनर्जी बढ़ जाती है, एक्साइट हो जाते हैं. एंड एट दैट टाइम द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज प्रमोटेड फ्रॉम 2s ऑर्बिटल इनटू 2pz ऑर्बिटल विच इज एम्प्टी. प्रमोशन का मतलब क्या है? एनर्जी मिलने के बाद वो, क्योंकि 2pz की एनर्जी ज्यादा है. And now what happened there? To have the equality, the proposal is given of mixing and redistribution. अब यहाँ पे कैसे अनइक्वालिटी है, 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, पर उसमें s वाला इलेक्ट्रॉन जो है that is spherical shaped orbital, then s orbital is nearer to nucleus, bond will be more stronger. Okay, p orbital dumbbell shape है, they are somewhat away, तो उसके बॉन्ड थोड़े वीक होंगे इसके हिसाब से. तो इसलिए इक्वालिटी लाने के लिए प्रपोजल दिया जाता है दैट विल हैव मिक्सिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन इन इक्वल नंबर. तो उसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट. उस टॉपिक में आपने बिल्कुल पढ़ा होगा. नाउ व्हाट हैपन देयर? द प्रपोजल विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय दैट 2pz ऑर्बिटल एंड दैट रिमेन्स अनहाइब्रिडाइज्ड. तो इसलिए अभी क्या होता है देखो, ओनली 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल्स, 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल नंबर से, 2p के ऑर्बिटल और 1s का ऑर्बिटल, दे आर अंडरगोइंग मिक्सिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन. 2pz इज अनहाइब्रिडाइज्ड. तो अभी क्या होने वाला है देखो, नाउ दिस इज 1s2, ये तो इनर है, एंड नाउ आउटर विल बी लाइक दिस. 2 ग्रुप नहीं चाहिए थे लेकिन हो गए, 1 2 3. नाउ दिस 3 ऑर्बिटल्स विल बी ऑफ इक्वल एनर्जी एंड दे आर नोन एज 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ये स्ट्रॉन्ग होते हैं. ओके, और ये 2pz जो मीन माइंडेड था, जिसने कहा कि मैं नहीं कंट्रीब्यूट करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज अनहाइब्रिडाइज्ड. और इसलिए इसका जो बॉन्ड बनता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है. ओके, वो कहता है मैं क्यों डिग्रेड करूं, मैं डिग्रेड नहीं होने वाला. दैट्स व्हाई इट डज नॉट टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन. सो द ऑर्बिटल व्हिच इज नॉट टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन विल गेट द पनिशमेंट ऑफ दैट. विल सी. अब देखो क्या हो गया है,
this is called the sp2 hybridized state of carbon. If such 2 carbon and 4 hydrogen will be there, तो क्या होने वाला है? ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मैं लिखूंगा इसका, it is like this, एक larger orbital, एक smaller orbital. Then the another is the larger lobe, smaller lobe. Then another is there. They are directed toward the 3 corners of a regular triangle having that one unpaired electron. The angle between 2 orbitals will be there. How much? It will be there 120 degree. Okay. और दूसरा कार्बन भी ऐसा ही है. Another कार्बन, तो उसका भी मैं ये ऑर्बिटल दिखाऊंगा एक. Okay, this is carbon. Then this is larger lobe. This is smaller lobe. Then this is larger lobe. This is smaller lobe. इसका भी smaller lobe इधर है. Larger lobe, डम्बे शेप था ना, उसका शेप बदल गया है. And then this is smaller lobe. Okay. This is having 1 electron. This is having 1 electron. This is having 1 electron. अब यहाँ पे pairing हो गई. Now this pairing is there, particularly called as axial overlapping. ये axial along the axis अगर orbitals overlap करते हैं along the axis, तो उसे कहते हैं axial overlapping. Hydrogen भी आता है, and then it has got one s orbital, you know. So this is hydrogen, its electron. यहाँ पर भी वैसा ही हो जाएगा, one hydrogen s orbital, 1 electron of hydrogen. यहाँ पर भी वैसा ही हो जाएगा, one more hydrogen. And here also the same thing, one more hydrogen. So 4 CH bonds are formed. Now CH bond is formed here by sp2 dash s axial overlap. Axial overlap. sp2 orbital of carbon and s orbital of hydrogen undergo axial overlap, and we get this. This is called as a sigma bond. Same here, same here, same here. So how many sigma bonds are formed there? 4. और ये भी जो है इसे this is called as sp2 dash sp2 axial overlap. Now this is that also sigma bond. ये 5 sigma bond तो हो गए. Now what happens to that unhybridized orbital? It remains perpendicular to this. These 3 orbitals को ये perpendicular रहेगा. One lobe is upper, one lobe is lower. Here also one lobe is upper, one lobe is lower, and it is perpendicular to this. And now they will undergo sidewise overlapping or vertical or parallel lateral overlapping. ये lateral overlapping कर लेते हैं. Okay, this is called the lateral overlapping, and this is forming the pi bond. इसे कहते हैं 2pz lateral overlap, and that is forming pi bond. Okay, तो ये डबल बॉन्ड बन गया, particularly C double bond C, hydrogen to this carbon, hydrogen to this carbon. All 4 are sigma bonds for CH. One is sigma bond for carbon, and one is pi bond. Okay, so this is the structure of that ethene. The bond angle between CHC is 120 degree. Okay, ये bond angle 120 degree है. तो ये अच्छी तरह से लर्न करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, the structural aspect of that ethylene molecule. अब यहाँ पे आपको ध्यान में आएगा why sigma bond is stronger and why pi bond is weaker. Because the vertical overlap is not very much greater extent. ये axial overlapping greater extent को हो सकती है, vertical को नहीं हो सकती उतना, लूज रहेगी, and that's why particularly that bond will not be very strong. Okay, so I'm sure that you understood this part very properly. Do see the video again to clear your concept.
वो पूरा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है जो नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में था. ये जानना जरूरी है, ये स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट टू लर्न द reactivity of ethylene. Okay, so we'll discuss about that in the next lecture. So do like and share this video, and we'll meet again in the next video. Thanks a lot.